Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will learn chapter 8 how do organisms reproduce part 2. So so guys, today's our topic is sexual reproduction. Why the sexual mode of reproduction? The creation of two new cells from one involves copying of DNA as well as of the cellular apparatus. The DNA copying mechanism, as we have noted, cannot be absolutely accurate, and the resultant errors are a source of variation in population of organisms. इसका मतलब है कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर डीएनए कॉपिंग होता है। जैसे कि एक जैसा डीएनए, एक ही डीएनए लेकिन उसका कॉपी होकर एक और डीएनए बनता है। इसमें एक डीएनए से दूसरा डीएनए मतलब एक सेल से दो सेल्स ऐसा नहीं होता। While DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. If the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copying would be able to work with the cellular apparatus and would die. So, how can the process of making variant be speeded up? Each new variation is made in a DNA copying that already has variation accumulated from previous generation. Thus, two different individuals in a population would have quite different parent patterns of accumulation variations. Since all of these variations are in living individuals, it is assured that they do not have any really bad effects. Sexually reproduction in flowering part. फ्लावर में ये आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर है फ्लावर का। इसमें जो स्टेमन है वो है इसमें जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो पिस्टिल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फर्स्ट, द पोलन्स फ्रॉम एंथर are transferred to stigma. Then through style it will goes to ovary and will form the bird-like structure, and from the bird it will create seed, and from the seed it will create a new fruit that we eat. मतलब ये जो एंथर है ये जो एंथर है वह ये वाला एंथर, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पॉलन्स होते हैं ऐसे। वो बाय एयर या बाय बर्ड्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा ये पोलन्स ट्रैवल होते हैं स्टिग्मा तक। सो गाइस, ये जो स्मॉल स्मॉल पोलन्स होते हैं वो एयर से या इंसेक्ट से स्टिग्मा में आते हैं। फिर ये जो स्टाइल है ये वाली जो स्टाइल है, इसको स्टाइल कहते हैं, वहाँ से वो पोलन्स ट्रैवल होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोलन्स ट्रैवल होते हैं और जाके ओवरी में जाते हैं। फिर वो ओवरी के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और
सीड बनाते हैं। उसमें जो अंदर की ओवरी है वो बनती है सीड, और जो ये ऊपर का लेयर है उसका वो बन जाता है फ्रूट। सो ये था सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो लेट अस गो अहेड। देखो गाइस, ये है, पहले ये पोलन ग्रेन्स है, ये वाले वो जा रहे हैं ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर ये जो हो रहा है वो फ्यूज होके फिर वो सीड बनाएगा, और ये जो ऊपर वाला लेयर है वो बनाएगा फ्रूट, और ये बनेगा सीड। एक्टिविटी 8.7, सोक अ फ्यू सीड ऑफ बेंगल ग्राम। एक थोड़े चने लीजिए और उसको भिगो के रखिए पूरी रात। ड्रेन द एक्सेस वाटर एंड कवर द सीड विथ अ वेट क्लॉथ। अब वो भिगोए हुए चने को एक कपड़े में डालिए और उसका सारा पानी निकाल दीजिए। नाउ कट ओपन द सीड केयरफुली एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट्स। अब वो सीड को कट कीजिए और उसमें से जो अ, उसमें से जो निकलता है उस सब को ऑब्जर्व करिए। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द फिगर 8.9। ये जो फिगर है उससे कंपेयर करो। एंड सी इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई ऑल पार्ट्स। और जो फिगर दिख रही है वैसे ही है और उसको आइडेंटिफाई करो, ये दिया है उससे। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। This is urinary bladder. From it, the ureter take ureter is connected to testis, and the pipe which is connected to the testis is known as vas deferens. और ये जो उसके ऊपर का ये कवर है, ये कवर को कहते हैं स्कॉर्टम। अब ये जो यूरेथ्रा है, ये वाला अंदर का जो वाइट दिख रहा है वो यूरेथ्रा में से जब हम वॉशरूम जाते हैं तो यूरिया निकलती है, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्मेंटेशन ये जो टेस्टिस है वहाँ से स्पर्म निकलेगा और ऐसे ट्रैवल करके यहाँ से बाहर निकलेगा। सो ये था ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस डायग्राम। नाउ दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। This is ovary, from which estrogen and progesterone releases. From here, the estrogen or progesterone
mix with sperm. So guys, this is vagina. This is important part in the female reproductive system. This is fallopian tube. This in the fallopian tube or oviduct, the ovaries are secreted. So this was female reproductive system, and this is also important like the male reproductive system. What happens when the egg is not fertilized? If the egg is not fertilized, it lives for about 1 day, since the ovary release one egg every month. जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है? तो एग जब फर्टिलाइज नहीं होता वो एक दिन तक ओवरी में वहीं पे रहता है. द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ. और यूट्रस भी उसको हर महीने प्रिपेयर करता है. टू रिसीव्स अ फर्टिलाइज्ड एग, दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी. वो फर्टिलाइज एग जो होता है उसको बहुत केयरफुली हैंडल रहना पड़ता है, इसलिए उसकी जो इनर लाइनिंग है वो थिक होती है और स्पॉन्जी भी होती है, जिससे वो एग को कुछ हो ना. दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस. Now, however, the lining is not needed any longer, so the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus. अब उसको ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, इसलिए वो वजाइना से ब्लड और मुकाउस का मतलब जो वाइट कलर का निकलता है ब्लड के साथ, वो वैसे ही निकल जाता है. This cycle takes place roughly every month and is known as menstruation. और ये हर महीने होता रहता है और इस प्रोसेस को menstruation कहते हैं. It usually lasts for about 2 to 8 days. ये 2 से 8 दिनों तक रहता है. Reproductive health. As we have seen, the process of sexual maturation is gradual and takes place while generally body growth is still going on. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual acts or for having and bringing up children. How do we decide if the body or the mind is ready for this major responsibility? All of us are under many different kinds of pressure. About this issue, there can be pressure from our friends for participating in many activities, whether we really want to or not. मतलब मैरिज के लिए और वो सब के लिए बहुत फोर्स किया जाता है, लेकिन अगर मैरिज सही टाइम पे किया जाए तो ही अच्छा. मतलब है अगर राइट एज पे ही करना चाहिए मैरिज. वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ consequence of having sex. So guys, this is the end of our chapter. So thank you and have a nice day. If you like my video, please like, share and subscribe.